Assalamu alaikum viewers. Welcome back to our channel. I hope you are doing well. We have recently completed Future Simple Tense. We have covered its definition, use, structures and practice exercise. Now we are going to delve in the present continuous tense, which is also known as present progressive tense. So let's get started. This tense is used to describe the actions which are happening right now or around the current time. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल किया जाता है ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए, ऐसी एक्टिविटीज को नरेट करने के लिए जो करंट टाइम में चल रही हैं या करंट टाइम के आसपास अराउंड द करंट टाइम परफॉर्म की जा रही हैं। इन एक्शंस में कॉन्टिन्यूटी है, इनकी परफॉर्मेंस में, इनके करने में कॉन्टिन्यूटी आ रही है, ये एक्टिविटीज कॉन्टिन्यू है। For example, I'm talking to you right now. You're watching my video lecture right now. In the above sentences, हम उन actions की बात कर रहे हैं जो अभी चल रहे हैं, अभी हो रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ अभी, या अभी आप मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। She is preparing for her examination this week. They are building their new house. वो इस हफ्ते अपने इम्तिहानात की तैयारी कर रही है। वो अपना नया घर तामीर कर रहे हैं। इन बोथ द एग्जाम्पल्स हमने उन एक्टिविटीज की बात की जो करंट टाइम में कॉन्टिन्यू हैं, जो अराउंड द टाइम चल रही हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को फॉर्मेट करने के लिए वी नीड सब्जेक्ट, देन वी यूज हेल्पिंग वर्ब, वर्ब टू बी, इज, एम, आर, बेस वर्ब प्लस आईएनजी. You can also say fourth form of verb and object. अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो not is added after is mr, and in interrogative sentences is mr is used before the subject, यानी सब्जेक्ट से पहले is mr आ जाएगा। wh फैमिली सेंटेंसेस में सब्जेक्ट से पहले और wh फैमिली वर्ड के बाद is mr आ जाएगा। Now let's talk about the structures of affirmative, negative, interrogative and WH family sentences. Positive sentences. Structure: subject plus is MR plus first form of verb plus object. Boss is scolding his subordinates. Boss अपने मातहतों को डांट रहा है। Subject boss. Helping verb is. Base verb plus ing यानी fourth form scolding. Object his subordinates. Negative sentences. Structure: subject plus is mr plus not plus form of verb plus object. They are not beating the children. वो बच्चों की पिटाई नहीं कर रहे हैं। Subject they. Helping verb are. Not. Fourth form of verb beating. Object the children. Interrogative sentences. Structure: is mr plus subject plus fourth form of verb plus object. Are you waiting for your friends? क्या तुम अपनी दोस्तों का इंतजार कर रही हो? Helping verb are. Subject you. Fourth form of verb waiting. Object friends. WH family sentences. Structure: WH family word plus is mr plus subject plus fourth form of verb plus object. Where is she building her new house? वो अपना नया घर कहाँ तामीर कर रही है? WH family word where. Helping verb is. Subject she. Fourth form of verb building. Object house. It is a very common mistake कि हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू बी या हेल्पिंग वर्ब लगाए बगैर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाकर अक्सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई टॉकिंग टू यू, शी प्लेइंग क्रिकेट. इट्स रॉन्ग. Whenever you want to format a sentence using present continuous tense, you must use helping verb. I hope
This lecture is quite entertaining and informative for you people. If you like it, don't forget to give a thumbs up. Share this video with your friends. Thanks for watching.